Hello children, how are you all? I hope you all are good and doing well at home. Children, as you all know that today this is our online EVS class and from today we are going to start with a new chapter. Okay, and I hope children that you all have completed your previous work which I gave you till yesterday. And yesterday I gave you chapter number 13, revision number 2. I hope you all have done that. And before that, I hope you all have completed your chapter number 13 in your EVS notebooks. Children, please make sure to complete your work on time. And if anybody who has not completed, please children, it's my request to complete chapter number 13 in your EVS notebooks and then get it corrected by me. Okay, you can come to school from Monday to Saturday and you can get your copies corrected from 10 a.m. to 1 p.m. Again, I am repeating, the timing for copy corrections are from 10 a.m. in the morning to 1 p.m. Okay. So, make sure that you will complete all your work on time. Now, as you all know that today we are going to start with a new chapter. So, please children, listen to my video very carefully because this chapter is very interesting as well as this chapter is very important. Okay. So, first of all, take out your Nature Learner EVS book and turn to page number 92. Okay. Chapter number 14, Sides and Directions. Now children, as you all know that sides and direction means, sides means like front, back, okay, left, right, all these are called sides. And what are directions children? Directions which we say like east, west, north, south. These are all our directions. So children, in this chapter you are going to study about the sides as well as directions. Okay. Now, before starting this chapter children, I would like to tell you that please look at this, watch this video very carefully and you will be understanding from this. Okay. Now, first of all, we are going to study about sides. Okay. What are sides? And then after that, what are directions? Now, first is sides. You often ask your parents where your pencil box is. Sometimes your mother says it is in front of you. Sometimes she says it is at your back. These words, front and back, are the names of sides. Now children, आपने कभी अपने पेरेंट्स से कभी पूछा होगा कि मम्मा मेरी ये चीज़ कहाँ है, तो मम्मा ने बोला होगा अरे आपके सामने है, आपके इन फ्रंट में है ना, या आपके बैक में है, ओके, आपके पीछे रखिए. सो ऑल दीज आर कॉल्ड साइड्स. There are particularly four sides. Okay, these four sides are front, back, right and left. Okay, now front, back, right and left are your sides. Is that clear? The following picture will give you an idea of the sides. Now, this is a girl standing, okay, in the middle. She is facing that side. She is facing, we can see her back. Okay, so that means इसका जो face है वो टीवी की तरफ है. जो ये टीवी बना है उसकी तरफ उसका face है और हम जहाँ से देख रहे हैं हमारी तरफ से इसका बैक है. ओके, नाउ दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड. ओके, you got it? Now children, you can see the television is in front of this girl. The chair is at her left, the radio is at her back and the table is at her right. Okay, so you can see from here the girl has a television in front of her. Television girl के front में है. Front means बिल्कुल सामने है. Okay, then she has a radio at her back. अब front में television है और उसके back में उसके पीछे क्या है? Radio. She has a table at her right. अब उसके right hand के पास क्या है? Table. And she has a chair at her left. उसके left hand पे क्या है? Chair. Now children, it is very easy to understand. Many of you will get confused. Okay, so
about right and left direction, sides. Okay, many of you children get confused about right and left side. So make sure that right side is that side from which side you write. Okay, आप जिस हैंड से आप लिखते हैं, मोस्ट ऑफ यू राइट विद योर राइट हैंड. ओके, सो राइट हैंड से जो लोग लिखते हैं, आप लोग लिखते हो, तो आपका राइट हैंड इज योर राइट साइड एंड योर लेफ्ट हैंड इज योर लेफ्ट साइड. इज दैट क्लियर? हम लोग सब राइट हैंड से लिखते हैं, तो राइट हैंड क्या है आपका? राइट साइड. और लेफ्ट हैंड क्या है आपका? लेफ्ट साइड. और जो बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनको भी इजीली पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट साइड और राइट हैंड पे राइट साइड. इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. If you know the sides, you can easily find anything in your room or classroom. If you know the sides, अगर आपको sides के बारे में अच्छे से पता है, then you can easily find in your room or anything in your room or classroom. अगर आपको sides के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि ये आपका front है, ये आपका back है, ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है, देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू ऑल टू फाइंड एनीथिंग. कहीं पे भी कोई भी चीज़ होगी, आप बहुत आसानी से उसको ढूंढ सकते हो अगर आपको साइड्स के बारे में पता है. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज ऑल अबाउट साइड्स. ओके, now coming to directions. So turn to page number 93. Next page, directions. The rising sun helps us to find out directions. Now children, how many directions are there? There are 4 directions: east, west, north, south. Okay, and these 4 directions, how we know these 4 directions are very easily they can be very easily find out. We can all find out these directions very easily because of the rising sun. जहाँ से सन राइज करता है वहाँ पे ईस्ट होता है. ओके, बिकॉज इट इज सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट. सो ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट है. सो द राइजिंग सन हेल्प्स अस टू फाइंड आउट डायरेक्शंस. हम सूरज के उगने से पता कर सकते हैं डायरेक्शंस को. ओके, सन के ऊपर आने से, सन के राइज होने से. सो द सन राइजेज इन द मॉर्निंग इन द ईस्ट. सन कब निकलता है? सुबह सुबह निकलता है. और वो कहाँ से निकलता है? ईस्ट से. देन इट सेट्स इन द इवनिंग इन द वेस्ट. सनराइज मॉर्निंग में करता है ईस्ट से, फिर कहाँ पे सेट होता है? इवनिंग में, वेस्ट में. The words east and west are names of the directions. Okay, there are 4 main directions. These are east, west, north and south. Is that clear? Now there are 4 sides, children. You all remember when we have studied about sides? So there are 4 sides: front, back, right and left. And in the directions also there are 4 directions: east, west, north and south. Okay, now how to find out the directions. अब हमें डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना चाहिए? जो ये वाला पिक्चर था गर्ल वाला, उससे तो हमने साइड्स फाइंड किया, बट अब हमें डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट. स्टैंड अर्ली इन द मॉर्निंग फेसिंग द राइजिंग सन. आपके घर से जहाँ पे भी सन राइज करता है, आप वहाँ की तरफ फेस करके सुबह सुबह खड़े हो जाओ. स्ट्रेच योर बॉडी, स्ट्रेच बोथ योर आर्म्स एज शोन इन द पिक्चर. और अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेच करके फैला के खड़े हो जाओ ऑपोजिट डायरेक्शंस में. ओके, देन योर फेस इज टूवर्ड्स द ईस्ट, क्योंकि आपने राइजिंग सन की तरफ फेस किया है, तो वो कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट. योर बैक इज टूवर्ड्स द वेस्ट. आपके बैक में, आपके पीछे वेस्ट है, क्योंकि ईस्ट के ऑपोजिट ही वेस्ट होता है. सो यू ऑल नो दैट अगर ईस्ट से सन निकल रहा है तो वेस्ट में सेट होगा. तो ईस्ट की तरफ आपका फेस है, तो आपका बैक वेस्ट की तरफ है. योर राइट आर्म पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ. अब जो आपका राइट आर्म है, राइट मीन्स जिस हाथ से आप लिखते हो, वहां पे साउथ है, और लेफ्ट आर्म पॉइंट पे आपका नॉर्थ है. इज दैट क्लियर? सो
इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट. अगर आपको कोई भी डायरेक्शन फाइंड करना है तो आप कैसे पता करोगे कि आप पहले देखोगे कि आप कहाँ से आपको सन दिखाई देता है जब वो सुबह सुबह निकलता है. ओके, राइज करता है, और जिस तरफ से वो राइज करता है उस तरफ आप अपना फेस करके खड़े होगे, और वहां से आपको फिर पता चलेगा जहां से आपका फेस होगा राइजिंग सन की तरफ, दैट विल बी योर ईस्ट, एंड योर बैक विल बी वेस्ट, योर राइट आर्म साइड विल बी योर south, and your left arm side will be your north. Is that clear? The knowledge of directions help us to locate things in a neighborhood, town or city. हमें डायरेक्शंस के पता होने से क्या हेल्प मिलती है कि हम कोई भी चीज़ को लोकेट कर सकते हैं अपने नेबरहुड में या अपने टाउन और सिटी में. जहाँ भी हम किसी भी सिटी में रहते हैं हम उस जगह को ट्रेस आउट कर सकते हैं डायरेक्शंस की मदद से. Is that clear, children? Now, turn the page. Recap points. There are 4 sides: front, back, right and left. There are 4 directions: north, south, east and west. And the third point is the sun helps us to find out directions. Is that clear, children? I hope you all have understood this chapter. So, today I am not giving you any assignment to write in your book or notebook. Today's assignment is your work is to read this chapter at home very carefully and understand all the sides and all the directions. Is that clear? Today you will do only this work, and after that tomorrow I will be giving you the book exercises. We will complete book exercises tomorrow, and then after that we will complete our notebook work. Okay, so please children, read this chapter very carefully. Read all the directions and all the sides. Try to understand from these 2 pics. Okay, this picture will help you to understand the sides, and this picture will help you understand the directions. So please make sure that you will understand very carefully. Is that clear, children? Now till my next video, bye bye children, take care, and please children, stay at home and stay safe.